कार्यकर्ता, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मोदी का स्पिन ऑन प्रियंका। जैसे ही इलेक्शन आते हैं हर जगह टीवी और न्यूज़पेपर में इन पार्टीज के ऐड भर जाते हैं। इसमें इन सब में तो बहुत पैसा लगता हो, कहाँ से आता है ये सब पैसा? और वैसे भी अपने काम के बारे में ऐड करना ही क्यों? ये कोई बिजनेस थोड़ी है। और मैंने तो आज तक किसी नेता की शक्ल भी नहीं देखी, ये तो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर में ही दिखते हैं। रोहित, अभी तू छोटा है, बड़ा होगा ना तब समझ जाएगा। ये पॉलिटिक्स पूरी गटर है, इसमें सब चोर और गंदे लोग भर्ती पड़े हैं। ये पैसे कमाने के लिए ही पॉलिटिक्स में उतरते हैं और कुर्सी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पैसा दारू बांट कर जीत तो जाते हैं, मगर 5 साल तक हम पर राज करते हैं और मुझे ऐसी राजनीति से सख्त नफरत है। क्या हमें अच्छे लीडर्स नहीं मिल सकते? क्या हमेशा ऐसे ही लोग पावर में रहेंगे? यार करप्शन तो हर कोई करता है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, मौका देखकर हर कोई चौका मारता है। तो अगर पब्लिक ही करप्ट है तो फिर नेता को ब्लेम करके क्या फ़ायदा? आज हम लोग अगर किसी स्लम में या बस्ती में कहीं झुग्गी में जाते हैं तो वहाँ पर इतनी बुरी हालत है। वहाँ पर तो बेसिक फैसिलिटी जो होती है, पानी, साफ़ सफाई, नाली की सफाई, सीवेज, उसी का कोई ठिकाना नहीं है। तो वो जो गरीब है वो तो समझते हैं कि यही उनकी दुनिया है, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो वो सोचते हैं कि जब उनको ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो 5 साल में एक बार दिवाली क्यों ना मना जाए। तो वो इसको सब बोनस की तरह समझ के ले लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है और ये पैसा कहाँ से आता है? एक्चुअली पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। 80% ऑफ द पॉलिटिकल फंड्स जो आते हैं उसके सोर्सेज अनडिफाइंड एंड अननोन है, एंड 20,000 से नीचे डोनेशंस आते हैं उसकी पार्टी मेंटेन नहीं करती है। तो इसी बात का हमारी पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदा उठाती है। तो द क्वेश्चन इज कि क्या हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? फिर घूम फिर कर वही बात पर आ गई। ऑलमोस्ट 1 साल पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर पास किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के अंदर आती है। बट ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम उस लॉ में अमेंडमेंट ला के अपने आप को आरटीआई के बाहर रखेंगे। बट क्योंकि इलेक्शन आने वाला था तो इन्हें डर था कि कहीं पब्लिक में गुस्सा ना बढ़ जाए, और इन्हें यह भी डर था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज ना कर दे। तो ये बोल के उन्होंने उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज भी वो ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुश्किल से 2 या 3 पार्टी सिर्फ आरटीआई के अंदर आना चाहती है, बाकी सारी मेजर नेशनल पार्टीज तो कोई भी नहीं आना चाहती। इसलिए इंडिया को अमीरों का गरीब देश कहा जाता है। ये इस देश से पैसा लूट के फॉरेन देश में पार्क कर देते हैं। क्या तुम्हें पता है, इंडिया कम्स सेकेंड ओनली नेक्स्ट टू यूएस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन स्पेंडिंग। और तो और जो इंडिया में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो गरीबों की सहायता के लिए या किसी हेल्प के लिए या किसी नोबल कॉज के लिए कोई काम करना चाहता है, तो वो गुप्त दान 10 लाख रुपए के ऊपर ले नहीं सकता है, और अगर लेता है तो उस पर 30% टैक्स देना पड़ता है। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री हैंड है कि वो चाहे जितने भी सीक्रेट डोनेशंस ले सकते हैं, एनोनिमस डोनेशंस। सो अगर आपको ब्लैक मनी को प्लग ही करना है तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हो? आज तो कोई अच्छा काम करने के लिए अगर ब्लैक मनी भी यूज करता तो नहीं कर सकता है, और पॉलिटिक्स में चाहे जितना भी यूज करो। तो और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अल्कोहल एंड टोबैको कंट्रोल करने की बात भी नहीं करती, उल्टा ये इलेक्शंस टाइम गरीबों को फ्री में बांटती है। इन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये अपने ही लोगों को जहर पिला रही है। क्या तुम लोगों को पता है कि आईटीसी ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्टीज को फंडिंग करती है, और ये बाय इटसेल्फ जो WHO कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, ये उसका वायोलेशन है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि गवर्नमेंट और टोबैको कंपनीज मिली हुई है और ये लोग प्रॉपरली टोबैको कंट्रोल नहीं कर रही है। अब ऐसे जॉब क्रिएशन का क्या फ़ायदा? So what about those poor people who are already addicted to alcohol? हम उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे?
ये लोग को तो टोबैको प्रोडक्ट्स पूरा बैन क्यों नहीं कर देते? जो कंट्री मेड लिकर है उसको, उसका रेगुलेशन और जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जो इलेक्शंस के 2 महीने पहले तक ये लोग अल्कोहल प्रोडक्शन पे पूरा बैन लगाया जा सकता है, बट ये लोग नहीं करते। क्या तुम लोगों को पता है कि इंडिया में आज भी ऐसे कई स्टेट्स है जहाँ पर अल्कोहल पे वैट का परसेंटेज 0 to 7% है, और जबकि पेट्रोल और डीजल का परसेंटेज 25% है। रियली? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इन लोग महंगाई को क्या कम करेंगे? इन लोग ना ही कोई एक्शन लेने वाले हैं, ना ही लॉ में कोई चेंजेस लाने वाले हैं। So what is the way out? चलो, अगर पॉलिटिक्स से बात छिड़ी गई है तो चलो आज क्यों ना शाम को हम लोग इसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कैसे यूथ एक मीनिंगफुल रोल और एक ड्राइवर बन सकता है हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, शाम को बैठते हैं। ठीक है, ओके। Before we talk about politics, let me make you one thing very clear. The quality of a politician is directly proportional to the quality of the people. You cannot change the quality of a politician without changing the quality of the people. Now, we speak of development in terms of job creation, GDP growth, interest rates, capital markets, forex reserves, right? Now, just go and visit any slum or basti in your adjoining area. You did not go too far, and just do a survey and find out the average number of children per couple in a family. Now the number would be somewhere between 3 to 5. Now suppose a couple has 4 children. Now this increases in geometric progression. Now each of those 4 children have 4 children each. So for how long will the current definition of development be able to sustain this? I fail to understand that why the politicians do not talk about development in terms of improvement in UN Development Index, reduction in population growth rate, increase in per capita income, improvement in the transparency index. India comes only next to US in terms of political campaign expenditure, but it comes first in the world in terms of the number of people who openly deficit. Now what is happening? The real situation is we, the well-to-do people, are blaming the politicians and the poor. The politicians we are blaming for corruption, that they are neck deep into corruption, and the poor people do not work, or the poor people drink liquor, they sell their votes. Now this is a vicious cycle. Merely criticizing these two ends will not help. Now what is the solution to this? Now the problem lies in our education system. We attend 14 years, a minimum of 14 years in school, and we go to 5 to 6 days to the school. So why cannot one day be devoted to community work? We can, within the school, based on the area of residence, groups can be formed, and that group can devote one full day in a week to the community. They can just roam about the area where they live and see what are the issues over there, like whether the government schools are working properly, what is the situation in the government hospitals, whether the slums, juggies or bastis have proper sanitation, proper water supply, proper sewage. Now see, what happens is, now where the government can suppress 1 or 2 activists, but when the entire community gets involved, it cannot be suppressed at any cost. Now these poor people will have a light to see that yes, there is someone who will stand for them. Now imagine this, and what is happening actually, that even if a few of us we take an initiative, and then if the whole community is not involved at present, if a few people take initiative, then you just call it netagiri kar raha hai, and there is a lot of stigma involved. It is this activity is shunned, that this is some as if it is the activity of some god-forsaken people. I give you 2 examples to explain this. Once I was taking a session and I entered the class. I asked all the students to raise up their hands like this. Now what happened? As usual, a few students came late, 2 to 3, and as they entered the class, they also raised up their hands. Then I did not ask them to raise their hands, but still, why did they do so? The answer is pretty obvious, because all of them were raising up their hands. So your life pattern is all similarly based. You are just following what you are seeing around. There is no actually application of your own mind. So we are blindly following what I call the mental conditioning. What we have seen around us, we have become social robots.
the products of our social mental conditioning which we are seeing around us. I give you another example. Once I went to the municipal corporation to take up the water and sewage issue of my adjoining basti, and there I met a reporter, and the reporter asked me that what was my profession, what I did. I said I'm a chartered accountant. He was shocked. He was totally shocked, and he said, "आपका पेट बहुत भरा हुआ होगा?" I said, "No, बिल्कुल खाली है." Then he said, "आप बहुत लो कास्ट के होंगे, आपने इसको खुद इस दर्द को आपने खुद कभी महसूस किया होगा, तभी आप ऐसा कर रहे हैं." Then I said कि ऐसा कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता, I am just a normal human being, और वैसा कुछ नहीं है. Now what does his response say? It is very necessary to closely analyze this. What has happened is, since birth till date, he has not seen any well-to-do people getting involved in these sort of activities. So he is interpreting my actions as per his past experience. Now it is very important to understand that what you are thinking today, what your actions is simply your past memory. It's just you are responding to today's situations as based on your past memory. And but life is not so static as your past memory. So when you associate, you have these type of activities, helping the poor, getting involved in all these things, have not been seen by you since birth. So it is generally shunned, that it is not for us, or generally people do not like it. There is a kind of stigma attached, that what people may think, that if I suddenly start roaming in a basti or doing surveys, or getting involved in these things, so we generally tend to shun these things. So you need to break these shackles and think very, very independently. That now another problem that I would like to talk about is, we talk about poor, that yes, they are drenched in alcohol, they have large families, so they are themselves responsible, and hence things cannot be improved. Now just let us go into more deeper, that why do people drink alcohol, or for what is responsible for any sort of addiction. There is a hormone called dopamine. Dopamine is responsible for all sort of addictions, whether it be gambling, drinking, smoking. It's all sort of addictions are due to dopamine. And the hormone responsible for love, friendship, is oxytocin. Now there is a complete lack of oxytocin in their lives. There is a complete lack of oxytocin, and hence the reality is too harsh, and hence they want to move away from it. The mind does not want to see this reality in which they are living, and hence dopamine becomes very active. And hence, this is why, it is not, even if maybe me or some of you, if they are born in such families, then we would have been like them. It is simply because, you have been saying all around hopelessness. So I think this blaming will not help, and there is nothing of that sort that you should have, attach any sort of stigma in getting along and, bringing those things back in the mainstream. One very other important aspect, that why we are so busy in this mindless consumption or accumulation. What we have happened is, we have been, since birth, we have jumped into this race of accumulation. What happens, we attach our identity to these external things like belongings and external materialistic things. So it becomes the ego. The ego is that false identity, that I. So that is why you find it perfectly okay to indulge in these things. And the ego gives you a sense of security. That is the seduction of the ego. The society will give you respect, honor, acceptance, approval, but it will take your freedom in return. You may be called a mad, a sick person, but remember, all the people who have defined humanity have been mad, have been crazy. So it is very natural, when you suddenly start doing something which is something different from the crowd, it is natural to be called mad, because mad is what 99 people are not doing out of 100. So I request you to take initiative and make a difference. Thank you.